morning students, today we'll be doing subject English, and in English today we'll be doing E sound words. We have already covered A sound words, so today our topic is E sound words. So before reading the words, let us know what is the sound of letter E. The sound of letter E is eh. What is the sound? It is eh. So now let's read the words. E sound words. First we will do EN, that is N sound words. D, N, den. H, N, hen. T, N, ten. Den, hen, ten. ET sound words. ET is et. We call it et. P, et, pet. V, et, vet. Vet means doctor of animals. W, et, wet. Here wet means to get wet, गीला होना. Let's move ahead. Before moving ahead, I want to tell you, you can read these words from your book, page number 12 and 13. Page number 12 and 13. Next are EN and ET sentences. Now we will read the sentences of these words. THIS, this. Is. This is Ben. This is Ben. Second sentence. Ben, has. Ben has a pet hen. Third sentence. The, the hen is wet. The hen is wet. Next, the wet hen is sick. SICK. Together CK we will pronounce it K. Sick. The wet hen is sick. Next line. There. 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 There is a vet. वहाँ पे vet doctor है. Ben takes, TAKES, takes the wet hen to the vet. Ben takes the wet hen to the vet. And you can read these sentences from your book, page number 1414. ED and EG sound words. ED is ed. B, ed, bet. F, ed, fed. R, ed, red. Bed, fed, red. EG, egg. EG is egg sound. B, egg, beg. L, egg, leg. P, egg, peg. Let's read once again. Bed, fed, red, beg, leg, peg. And you can read these words from your book, page number 1515 and 1616. Next, ED and EG sentences. Ed and egg sentences. This, THIS, this. This is, is. This is Meg. Egg,
Meg. Meg has, H-A-S, has. Meg has a bag. Meg has a bag. As you can see, Meg is having a red colored bag. Meg has a red bag. Meg has a red bag. The red bag is on the bed. The red bag is on the bed. Next line. The red bag has a peg. The peg hurts her leg. H-U-R-T-S, hurts. The peg hurts her leg. Last sentence. H-E-R, her. Her leg is red. Once again, let's read these sentences. This is Meg. Meg has a bag. Meg has a red bag. The red bag is on the bed. The red bag has a peg. The peg hurts her leg. Her leg is red. And you can read these words from page number 17 of your form. Students, now we will read sight words, the new words that we have seen in the sentences. A-I-S is, T-O-2-O-N, on, T-H-E, the, H-A-S, has, H-E-R, her, T-H-I-S, this, this, S-I-C-K, sick, sick, बीमार. T-H-E-R-E, there, वहाँ पे, there. Takes, T-A-K-E-S, takes. H-U-R-T-S, hurts, दर्द होना, hurts. Once again, a is, to, on, the, has, her, this, sick, there, takes, hurts. And these can be read from your book, page number 14 and 17. Students, with this we are done with our E sound words, and from today I want you to start with your cursive writing practice also. And for this we have a book named Phonics Workbook. Some of you are having and some of you are not having. So those students who have this book can practice in the workbook, और जिनके पास वर्कबुक नहीं है वो अपनी इंग्लिश की नोटबुक में प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. वील स्टार्ट विद द स्ट्रोक्स. फर्स्ट 3 पेजेस जो आपके हैं आज हम वो करेंगे, और फर्स्ट स्ट्रोक आप जो करोगे वो है सी. ऐसे सी बनाना है आपने, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. यू स्टार्ट फ्रॉम डाउन, नीचे वाली लाइन से आप स्टार्ट करोगे, यू विल गो अप, कर्व हो जाएगा अंदर को, देन अगेन यू विल कम डाउन डाउन डाउन. आप प्रिंट लेटर में सी बनाते हो ना, वैसे ही सी बनाना है लेकिन थोड़ा कर्सिव फॉर्म में. देन अगेन, और ये सारे जॉइंट हैं आपके बुक में डॉटेड फॉर्म में दिए हुए हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने में ईजी हो जाएगा. एंड नेक्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस इज दिस स्ट्रोक. ई जैसे दिख रहा है ना, लाइक अ रोलर कोस्टर, ये आपने ऐसे हाथ से प्रैक्टिस कर लो, पहले रफ में प्रैक्टिस कर लो, एंड देन यू हैव डॉट्स, प्रैक्टिस ऑन डॉट्स. और जिनके पास बुक नहीं है, नोटबुक है, तो मम्मा की हेल्प ले लो कि मम्मा फर्स्ट 2 लाइन्स में डॉट्स लगा दो, सो दैट उस पर प्रैक्टिस करके देन आई कैन स्टार्ट राइटिंग माई सेल्फ. सिमिलरली दिस इज इन द फॉर्म ऑफ यू. यू विल गो अप, देन कम डाउन, turn, then go up, then down, turn. Similarly, you will follow this pattern. These 3 patterns are given on your page number 3, 4, 5 of your
फोनिक्स वर्कबुक, ये फोनिक्स वर्कबुक के पेजेस हैं 3, 4, 5। जिनके पास बुक है वो बुक में प्रैक्टिस करेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी एक कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे एंड विल सेंड मी दी वर्क। गॉट इट स्टूडेंट्स? दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।